at the national level, as you're well aware, there was a statement made by the Congress President Kharge, where he was probably most obviously referring to Article 370, but instead he said Article 371. Now, that one digit change, which can happen by error or Freudian slip, whichever way you look at it, makes a huge difference, because one is referring to Kashmir, the other is referring to the northeast of India, Nagaland. Now, the BJP has caught on to this, and remember, there's a party machinery which is going speech by speech, line by line, trying to catch out the leaders. And of course, Mallikarjun Kharge has made a big Freudian slip. It's not a slip that he should have easily made, veteran like him. But anyway, in Rajasthan, he did this, right? He said the wrong article. Now, the Congress has come back and said that, yes, while he referred to the wrong article, this is somehow indicating that the BJP had some plans for the northeast as well, Nagaland specifically, and the Freudian slip is actually from the BJP's side, that this is inadvertently exposed, and the voraciousness of the BJP's response is because they are worried that the cat is out of the bag. Very conspiracy versus counter-conspiracy going on. Listen into what, of course, Sudhanshu Trivedi has said, and then the responses that have come in. यदि कोई पार्टी ये कहे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत साफ हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो हम लोगों को सबको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। और अब ये पार्टी अपने को ये कह सकती है, दिस इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द रीजनल फोर्सेस, यानी क्षेत्रीय ताकतों का एक समूह जो राष्ट्रीय दल होने का दावा अपने आप खारिज हो जाता है। ये शर्मनाक है कि खड़गे जी राजस्थान में 370 के विषय पर कहते कहते, पहले तो उनको पता नहीं कि जो आर्टिकल एब्रोगेट हुआ वो 370 है, 371 नहीं, वो 370 को 371 कहते हैं। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है जैसे जयराम रमेश बता रहे हैं, ये फ्रॉइडन स्लिप है। ये जो असलियत में इनकी मानसिकता है उसका स्लिप ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। इन्होंने कभी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा समझा ही नहीं। पहले तो 370 नाम की एक दीवार खड़ी की आम्बेडकर जी के और बाकी जो संविधान निर्माताओं के जो विशेष थे उसके खिलाफ जाकर, और आज जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर चलते हुए, जिन्होंने कहा था एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 को एब्रोगेट किया, इस दीवार को तोड़ा, लाल किले से लाल चौक तक आज तिरंगा लहराता है। कश्मीर में जिस प्रकार के बदलाव हुए, टेरर हॉटस्पॉट से टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है, तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर की बात राजस्थान में क्यों ना हो। अरे कश्मीर की बात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होगी। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। क्या चाहते हैं आप? कभी आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए जैसे नेहरू जी ने जाकर किया था, कभी कहते हैं अधीर रंजन चौधरी की तरह कि 370 नहीं हटाया जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का मामला है। मतलब ये जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग आज भी नहीं मानते, इसीलिए अभी भी वो कहते हैं कि हम 370 को फिर से लागू करेंगे, और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसका खंडन होना चाहिए। और किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े करना, कच्चथीवू से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये आज सामने निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहती है। इसलिए पीओके भी सौंप दिया था, अक्साई चीन भी सौंप दिया था, और अब तो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा भी नहीं मानती। Okay, all right. So away from the politics, I'm going to try to be realistic. Was he making a Freudian slip or the slip of the tongue? He was probably referring to 370 and not 371. Has this given an opportunity for the BJP to talk about a milestone achievement for them? Is the abrogation of 370. Now, whether you agree with it or don't agree with it, it was a popular decision, and it was in the manifesto of the BJP for decades, and it was delivered in this term. Mehndi Garg, my colleague, is joining us on the broadcast. Mehndi, how is this being perceived? Is 370, the abrogation, Kashmir, an important election point where you are standing?
Well, yes, Rishabh, as we all know that Mallikarjun Kharge's comment has become so controversial that Bharatiya Janata Party is attacking and taking a jibe over it again and again. And as we listen, that Sudhanshu Trivedi has said that Congress has lost all the rights to be a national party. All those things are happening, but it's true that the abrogation of Article 370 was a major issue for Bharatiya Janata Party over decades and for decades, because this was mentioned in their manifesto also. So, abrogation of Article 370 is a very sensitive and a very delicate topic of concern for Bharatiya Janata Party. And this goof up by Mallikarjun Kharge is very much making a controversy between the Bharatiya Janata Party, and it has created a war of words between both the parties. And Mallikarjun Kharge saying Article 370 as Article 371, it was a major goof up by them. Yeah. Okay. Very interestingly, the Congress manifesto does not say that they will try to make efforts to reinstitute Article 370. They stay away from CAA and Article 370. So the big question, of course, for the Congress is whether they are feeding, because, of course, the Prime Minister, who has led the government that has abrogated 370 and thinks it's a very big deal for the country, is going to campaign on the logic of the work that he's done in the past 3 or 4 years, and the opposition is going to oppose him. But whether making it an issue is what the Congress wants or the BJP wants is, of course, for the parties to figure out. Interesting side battle going on meanwhile in Rajasthan. Mehendi, thank you for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.